अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका ख्वाजा मोइनुद्दीन। आज हम लोग फिर से एक चिकन स्पेशल रेसिपी बना के दिखाएंगे। जी हाँ, चिकन विथ प्याज, चिकन विथ ऑनियंस। जी हाँ, बहुत ही स्पेशल रेसिपी है और नवाब्स किचन के स्टाइल में आसानी से कैसे बनाते हैं, चलिए देखते हैं। चिकन ग्रेवी रेसिपी आज हम लोग जो बना रहे हैं, चिकन विथ ऑनियंस। रेसिपी स्टार्ट करने के लिए पहले हम लोग इसमें चिकन ऐड करेंगे। इसी चिकन को हम लोग हाफ एन आवर तक मैरिनेशन करेंगे। उसके लिए पहले हम लोग इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। जिंजर गार्लिक पेस्ट के साथ साथ हम लोग इसमें रेड चिल्ली पाउडर भी ऐड करेंगे। अब इसी को हम लोग अच्छी तरह मिक्स करके हाफ एन आवर तक मैरिनेशन के लिए रखेंगे। अब इसी कर्ड को हम लोग कर्ड मसाला मिक्स तैयार करेंगे। इसी में हम लोग फिर से रेड चिल्ली पाउडर भी ऐड करेंगे। इसके साथ साथ हम लोग इसमें कोरिएंडर पाउडर और क्यूमिन पाउडर भी ऐड करेंगे। इन मसालों के साथ साथ हम लोग इसमें टर्मरिक पाउडर और सॉल्ट भी ऐड करेंगे। इन सभी चीज़ें ऐड करे बाद हम लोग इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इसी कर्ड मसाला मिक्सर को हम लोग रेसिपी में इस्तेमाल करेंगे। पहले हम लोग मेन प्रोसेस शुरू करेंगे। रेसिपी स्टार्ट करने के लिए एज यूजुअल बाउल गर्म हो गया है। पहले हम लोग ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल गर्म होते ही हम लोग इसमें फाइनली चॉप्ड ऑनियंस ऐड करेंगे। ऑनियन स्लाइटली ब्राउनिश शेड में आते ही हम लोग इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। जिंजर गार्लिक पेस्ट अच्छी तरह पके बाद हम लोग इसमें फाइनली चॉप्ड टमाटोस और इसके साथ साथ टमाटो प्यूरी भी ऐड करेंगे। नेक्स्ट इसी में हम लोग टमाटो अच्छी तरह पके बाद जो कर्ड मसाला मिक्स तैयार करके रखे थे उसी मिक्सचर इसमें ऐड करेंगे।
दही के साथ सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह बॉईल हुए बाद हम लोग इसमें जो मैरिनेटेड चिकन है वो ऐड करेंगे। चिकन पीसेस और अच्छी तरह बॉईल होने के लिए हम लोग इसमें थोड़ा सा वाटर ऐड करेंगे, उसके बाद लिड क्लोज करेंगे। पंद्रह मिनट तक चिकन अच्छी तरह पक के बाद हम लोग इसमें ऑनियन पेटल्स ऐड करेंगे। इमीडिएटली हम लोग इसमें ग्रीन चिल्ली भी ऐड करेंगे। इसके फ्लेवर और भी अच्छा बनाने के लिए हम लोग इसमें कसूरी मेथी ऐड करेंगे। नेक्स्ट इसमें हम लोग टमाटोस ऐड करेंगे। माशाअल्लाह, रेसिपी परफेक्टली बन गया है। चिकन भी अच्छी तरह बॉईल हो गया है, इन सारे इंग्रेडिएंट्स भी बहुत ही मज़े का बना है। फाइनली इसमें हम लोग फाइनली चॉप्ड कोरिएंडर ऐड करेंगे। 5 मिनट्स तक इसी आंच पे पकने देंगे, उसके बाद हम लोग बच्चों को सर्व करेंगे।
आज का ये वीडियो ऋषित के फर्स्ट बर्थडे के मौके पर स्पॉन्सर करे थे। ऋषित को नवाब्स किचन की तरफ से मेनी मोर हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, हैप्पी बर्थडे। ऑलवेजली आप लोग खुश रहे और हेल्दी रहे। जी हाँ, हमारे टीम को कांटेक्ट करने के लिए 786guardfoods@gmail.com पर मेल करिए और नेक्स्ट वीडियो अपलोड होने तक टीम के लिए दुआ करिए। अल्लाह हाफिज़।